dustbin, the bigger one, which is for made for now Japan, and that one is my street level small. So this dustbin I have made because nowadays the garbage is increasing. The problem of garbage in our environment. So our environment is polluted, and also the animals like cow, dogs are eating that garbage, and because of eating that garbage, they were not perfect digestion in plastic. So because of that, they were dying. So I think that why could we do it? डिक्रीज दिस प्रॉब्लम हम ये प्रॉब्लम को कम क्यों नहीं कर सकते या इसे कम कर सकते तो कैसे कर सकते हैं और अभी आजकल लोग क्या करते हैं अगर जो ब्लैक डिस्प्ले रहता है घर पे क्या करते हैं सब कचरे को मिक्स कर देते हैं जैसे वेट हो गया ड्राई हो गया जिनको सबको मिक्स करके एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर अगर दो डस्टबिन में रहते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि ना उन्हें कुछ पता चलता है और फिर जो गार्बेज हमारे जो गार्बेज कलेक्टर म्यूनसिपैलिटी कहते हैं उन्हें भी बाद में वो सेपरेट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया आमचो एक गांवगिऱ्या वाठाराचो विद्यार्थी आनी चड करून गव्हर्मेंट हायस्कूल आंबावलीचो स्टुडंट मास्टर फरहान राशीद शेख हाचो प्रोजेक्ट पयलीं स्टेट लेवलाचेर इन्स्पायर्ड म्हणून हाचे अंडर सिलेक्ट जालो ताजे उपरांत ताणें नॅशनल लेवलार पार्टिसिपेट जाले आनी आतां साकुरा हायस्कूल सायन्स प्रोग्रामा अंतर्गत ते जपानाक 14 तारखेक वतात 14 ते 21 मेरेन ताचो तो प्रोग्राम आसा आनी ताजे नंतर ते परत गोंया येतले तेन्ना एक गव्हर्मेंट स्कुलाचे हेडमास्टर आनी आमचो एक गव्हर्मेंट स्कुलाचो भुरगो इतली व्हडली जाग्यार पावता आनी इतली व्हडली तेणी काम केल्लें आसा कामगिरी केल्ली आसा त्या खातीर हांव एज अ हेडमिस्ट्रेस खूब आनी खूब म्हाका खोशी जाता facilitate this young talent from Government Higher Secondary School, Amboli. And Farhan Shaikh from the school has been selected for the Inspire program. And he is going to Japan for a 1-week project. So the Kunkoli Industrial Association, the school authorities have jointly come together to organize this felicitation program for this young talent so that he can be inspiration to a lot of others.